Today we are going to start the concept of average speed. In our previous class, we have seen some basic questions related to the time, speed and distance. So our today's topic of discussion is the concept of average speed. The concept of average speed. First, let me explain you what is the definition of average speed. What is the definition of average speed? Average speed, average speed is nothing but it is the ratio of is nothing but it is the ratio of total distance covered or traveled, total distance covered to the total time taken to cover the particular distance. According to the definition, the average speed is nothing but it is the ratio of total distance covered by the total time taken to cover that particular distance. That particular distance. If you are going to calculate average speed, you will face three types of problem. Beta, if you are going to calculate average speed, you will face three types of problem. First, when when only speed is given. When only speed is given. When only speed is given. Second type is when speed and time is given. When speed and time is given. Third category is when speed and distance is given. When speed and distance is given. And the last one is when distance and time is given. When the distance and time is given. So Vita, today we are discussing the concept of average speed. एवरेज स्पीड का क्वेश्चन बेटा चार टाइप से पूछ सकता है वो आपसे. फर्स्ट, जब आपको सिर्फ स्पीड दिया रहेगा. सेकंड, जब आपको स्पीड और टाइम दोनों दिया रहेगा. थर्ड वन इज जब स्पीड और डिस्टेंस दोनों दिया रहेगा. एंड फोर्थ वन इज व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम इज गिवन. व्हेन द डिस्टेंस एंड टाइम इज गिवन. So these are the four category of questions. These are the four category of questions he can ask to calculate the average speed. He can ask to calculate the average speed. Basic definition of average speed is what? Average speed is nothing but it is the ratio of total distance covered to the total time taken. So these are the four category in which he can ask question from you. See how to approach the question. How to approach the question. Suppose a person is traveling. Suppose a person is traveling from place A to B. From place A to B. A person is traveling from place A to B. First person is going from place A to place B with speed s1.
with speed s1 and returning back returning back from B to A at speed s2 and returning back from B to A at speed s2. First person is going from A to B with speed s1 and now coming back to point A from B with speed s2. In both the case, in both the case, the distance covered by the person is constant. Suppose person is going from A to B, person is going from place A to B in time t1 and coming back to point A or place A from place B in time t2. In time t2. See, listen very carefully. Beta, we know very well, speed is nothing but it is the ratio of distance upon time. It is the ratio of distance upon time. First, we will see the total distance. First, we will see. First, we will see the total distance covered by the person. Initially, person is traveling from A to B and covering distance D. Now traveling from B to A and covering the same distance, which is equals to capital D, which is equals to capital D. If suppose person is traveling from A to B and taking time t1, so what is time? Time is nothing but it is the ratio of distance upon speed. And what is the speed? To travel from A to B s1. Again, person is traveling from B to A with speed s2. So time taken to travel from B to A is nothing but distance upon what is speed s2. What is speed s2? So according to the definition, what is what is average speed? Average speed is nothing but it is the ratio of total distance. It is the ratio of total distance to the total time. To the total time. First person is traveling from A to B, covering D distance, now coming back from point B to point A and covering the same distance, capital D, covering the same distance, capital V. A person is traveling from A to B taking t1 time and in returning back taking t2 time. Substitute all the values. So average speed is nothing but this will become 2d upon d upon s1 plus d upon s2. You will take d as common, d will cancel out, d will cancel out s1 s2. Why? After taking LCM s1 s2 you will get average speed. You will get average speed is nothing but it is 2s1 s2 upon s1 plus s2. 2s1 s2 upon s1 plus s2. So what is the average speed? 2s1 s2 upon s1 plus s2. Beta, is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Many times you have seen the formula. Many times you have seen the formula for average speed. And what is this? 2s1 s2 upon s1 plus s2. ये कहाँ से आता है बेटा? कैसे आता है? How we will get this formula? तो बेटा, the concept or the history behind this is the things that I have explained to you. That I have explained to you. But there is beta, if you will see, if you will see average speed, if you will see
the average speed, if you will see the average speed, this is nothing but 2 times of S1 S2 upon S1 plus S2. So what is the limitation of this formula? What is the limitation of this formula? This formula is valid only in case of when this formula is valid only when the distance covered when the distance covered when the distance covered is constant, when the distance covered is constant or same. Means initially person was traveling from place A to B, and he has covered distance small d or capital D, and returning back to point A from point B and covering the same distance which is equals to d. So what formula we have got? We got the formula 2s1 s2 upon s1 plus s2. Means this formula is valid only when the distance covered in each case is same. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? One more thing I am going to explain. One more thing. Suppose person is traveling with speed 50 km per hour from place A to B and returning back from speed 16 km per hour. Suppose he is going to ask what is average speed? What is average speed? First you will check. बेटा एक बात ध्यान से सुनेंगे कि जो भी आपको स्पीड दी हुई है बेटा, जो भी स्पीड आपको दी हुई है, ऑलवेज ऑलवेज जो भी हमारा एवरेज स्पीड होगा वो इन बिटवीन our average speed will be in between the given option or in between the given value. तो कई बार ऐसे होगा बेटा, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको 50 देगा, एक 60 देगा और एक बेटा हो सकता है 48 दे दे. तो जो भी 50 और 60 के बीच का ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा. तो आपको सॉल्व करने का भी नीड नहीं है, बट समटाइम्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो बेटा सॉल्व करना बहुत सिंपल है. what you will do nothing but 2 times of s1 50 into 60 upon 50 plus 60 110 2 into 50 100 upon 11 1 by 11 होता है 9.09 means 0.9. After solving this you will get 300 upon 11. After solving this Sir, 600. 600 upon 11. 600 upon 11. 600 upon 11. 600 upon 11. After solving this, you will get 54.54 as your average speed. As your average speed. Say yes or no, beta. Is this clear? Is this clear? I am again speaking, beta. There is certain limitation of this formula. There is certain limitation of this formula. And what is this? What is this? This formula is valid only when the distance covered in each case is same. The distance covered in each case is same. यहाँ पर तो बेटा हमने बात की है दो स्पीड को लेके. सपोज करो कहीं पर 3 स्पीड दी हुई है या n नंबर ऑफ स्पीड देगा, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है. फर्स्ट यू विल सी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन और बाय द पर्सन or by the any vehicle. Then you will see the total time taken. Then you will see the total time taken to cover that particular distance. Then use the formula total distance covered to the total time. You will get your answer average speed. Again I am telling one more example. I am telling one more example. Suppose a person is traveling from place A to place D, place A to place D, or I can write, suppose person is traveling from place A to B, but
he is traveling certain distance. Suppose he is traveling d distance with speed s1, and again next d distance with speed s2, and the next distance d with speed s3, with speed s3, ठीक है, with speed s3. बेटा डिस्टेंस आप कुछ भी ले लो, योर फाइनल रिजल्ट विल रिमेन सेम, योर फाइनल रिजल्ट विल रिमेन सेम. डिस्टेंस आप चाहे डी ले लो या 10d ले लो या हाफ डी ले लो, इट डजेंट मैटर, ऑलवेज योर आंसर और रिजल्ट विल रिमेन सेम. ठीक है बेटा, कुछ डिस्टेंस बंदा S1 की स्पीड से चल रहा है, S1 की स्पीड से चल रहा है बेटा, थोड़ा क्विकली मैं बताऊंगा. तो बेटा ये पर्टिकुलर पार्ट जो कवर करेगा बंदा, उसे पार करने में कितना टाइम लगेगा बेटा, d/s1. इस पर्टिकुलर पार्ट में कितना टाइम लगेगा बेटा, d/s2. और इस पर्टिकुलर पार्ट में कितना टाइम लगेगा बेटा, d/s3, d/s3. So what is the total time? What is the total time taken? d/s1 plus d/s2 plus d/s3. If you are going to take d1 as common, or upon s1 s2 s3, if you are going to take LCM, you will get s1 s2 plus s2 s3 plus s3 s1. ठीक है. Now see the total distance. If you are going to calculate average speed, total distance d plus d plus d, 3d, upon total time d upon s1 s2 s3 s1 s2 plus s2 s3 plus s3 s1 plus s3 s1. What is the final result? What is the final result? You will get final result nothing but 3s1 s2 s3 upon s1 s2 plus s2 s3 plus s3 s1 plus s3 s1 s3 s1. So beta again this formula is valid only when the distance traveled or the distance covered in each case is same. The distance covered in each case is same. Valid only when d is कांस्टेंट. जब कांस्टेंट डिस्टेंस क्या करेगा बेटा, बंदा कवर करेगा. कांस्टेंट क्या है बेटा, बंदा कांस्टेंट डिस्टेंस कवर करेगा. बेटा one more thing I am going to calculate, one more thing I am going to tell, one more thing I am going to tell. ये जरूरी नहीं है आप हमेशा फॉर्मूला यूज करो, आपके कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएंगे. सपोज करो बंदा कुछ डिस्टेंस 10 kmph से कवर कर रहा है और कुछ डिस्टेंस बेटा वो 20 kmph से कवर कर रहा है. अगर आपसे पूछना चाहता है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो बेटे एक फंडा तो ये है, यूज सिंपल फॉर्मूला 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2. बट बेटे कई बार ऐसा हो जाता है, मैनी टाइम्स यू विल सी, मैनी टाइम्स. देखो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले के हेल्प से भी कर सकते हैं. वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. बट समटाइम बेटा डेटा हमारे पास इतना टिपिकल हो जाता है तो मैं कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाता है. सपोज करो अनदर डिस्टेंस इज ट्रैवलिंग विद स्पीड 15 kmph, 15 kmph. तो बेटा व्हाट यू विल डू, बेटा व्हाट यू विल डू, यू विल टेक एलसीएम ऑफ ऑल दीज थ्री. इन तीनों का एलसीएम ले लो बेटा. एलसीएम लेके जो क्वांटिटी आएगी, सपोज करो मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके कितना आया बेटा 60. तो ये एलसीएम क्या डिनोट करेगा, दिस एलसीएम विल डिनोट द टोटल डिस्टेंस, दिस एलसीएम विल रिप्रेजेंट द टोटल डिस्टेंस विच वी हैव टू कवर. मीन्स हमने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा 60. अब देखो बेटे 10 km/h से 60 किलोमीटर कितने आवर्स में कम करेगा, फिनिश करेगा 6 आवर में. ये बेटा 3 आवर्स लेगा और ये बेटे कितने आवर्स लेगा, 4 आवर्स लेगा. तो बेटा टोटल टाइम लग कितना रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है बेटा 13 आवर्स लग रहा है. और कवर कितना करना है बेटे, कवर कितना करना है आपको
10, 20, ठीक है। कवर कितना करना है, तो हम बेटा एलसीएम लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर एलसीएम हमें एक लार्जर क्वांटिटी लेना पड़ेगा। अगर हम 60 को 13 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड बहुत कम आएगा, बट बेटा हमारा एवरेज स्पीड क्या होना चाहिए, इन तीनों के मिड में ही आना चाहिए एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एक अप्रोच तो ये है, या तीन स्पीड है तो आप फॉर्मूला यूज करो बेटा, व्हाट इज एवरेज स्पीड, यूज फॉर्मूला, एंड व्हाट इज दिस, 3s1 10 20 15 अपॉन 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 15 प्लस 15 into 10 plus 15 into 10, then what you will get 3 into 10 into 20 into 15, this is nothing but 9,000 upon 10 20 200 20 15 300 15 10 150, this is nothing but this is 650, this is 650, 9,000 divided by 650, you will get 13.84 km per hour, your average speed. बोलो बेटा, is this clear to everyone, is this clear to everyone, Raju, is this clear to you? Yes, sir. So beta, what we have seen the concept of average speed when Distance are on, same. sorry, Sir, all distance will be same or constant. हाँ, ये हमने कब देखा बेटा, जब हमें सिर्फ स्पीड दी हुई होगी, क्वेश्चन में स्पीड गिवन होगा और एज वेल एज डिस्टेंस क्या होगा बेटा, एज वेल एज डिस्टेंस क्वेश्चन में क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, एज वेल एज डिस्टेंस क्या होगा क्वेश्चन में, कांस्टेंट रहेगा। अब बेटा फिर बात करते हैं जब हमें स्पीड और टाइम दोनों दिया रहेगा। देखो, व्हेन स्पीड एंड टाइम बोथ विल बी गिवन, व्हेन स्पीड एंड टाइम both will be given to us, टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं बेटा, टाइप 2 वंस यू विल बी थोरो विद द कॉन्सेप्ट, फिर प्रॉब्लम करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चंस you will quickly solve the question. Type 2 means when speed and time is given, when speed and time is given, when speed and time is given, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल के हेल्प से मैं बताता हूं। सपोज करो बेटा, एक बंदा 15 मिनट तक चल रहा है एट व्हाट स्पीड, 40 km पर आवर, 40 km पर आवर, और बेटा फिर बंदा सपोज करूं 30 मिनट तक ट्रैवल कर रहा है एट स्पीड 45 km per hour. Suppose he is going to ask what is the average speed, और बेटा simply to make your calculation more easier, take time in terms of hours, ये 1.5 आवर ले लो बेटा, ये 3 आवर्स ले लीजिएगा। देखो बेटे, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या कहता है, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन कहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा टोटल टाइम तो मेरे पास है 1.5 प्लस 30, सॉरी 1.5 प्लस 3, टाइम कितना हो गया 4.5, बट बेटे आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बेटा मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, 40 की स्पीड से 1.5 आवर्स तक चलेगा, बेटा कितना किलोमीटर कवर करेगा, 60 किलोमीटर, 45 की स्पीड से बेटा कितने आवर्स तक चलेगा बेटे, 3 आवर्स तक, तो दिस विल कवर 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, 195 किलोमीटर, 195 किलोमीटर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 195
What is the average? What is the definition? Total distance 195 upon total time. Total time is how much? 4.5. After solving this, you will get your answer. You will get your answer. 4.5. 4.5 का 4 टाइम्स करूंगा तो बेटा 180 होगा, बट ये 15 ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेटली दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 43.33. 43.33. तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? व्हाट इज द एवरेज स्पीड? 43.33 किलोमीटर पर आवर. 43.33 किलोमीटर पर आवर. बोलो बेटा, इज टाइप टू क्वेश्चन इज क्लियर? इज टाइप 2 क्वेश्चन इज क्लियर? बेटा एक और मैं टिप्स आपको बता रहा हूं, और मैंने पहले भी बताया है. वॉट एवर मे बी द स्पीड, जैसे यहाँ पे स्पीड कितना था? 40-45. आधा टाइम कुछ भी हो बेटा, वॉट एवर मे बी द टाइम, आई विल फोकस ऑन द स्पीड. जो भी मेरी स्पीड दिए होंगे, तो माई एवरेज स्पीड विल बी इन बिटवीन द गिवन वैल्यू. माई एवरेज स्पीड विल बी in between the given value. If you will see the previous question, if you will see the previous question, if you will see the previous question, what was the speed value? What was the speed value? 10 20 15, 10 20 15. What it mean कि आपका एवरेज वैल्यू इसी के बीच में होना चाहिए. तो what average value you have got 13.84 km per hour average speed you have got. ठीक है बेटा. So this was the type 2 problem. Only speed was given to us and time. So with the help of speed and time, you have calculated the distance covered. Then we have used the formula. Average speed is nothing but total distance upon total time. Total distance was 195 kilometer. Total time taken was 4.5 hour. हमने सॉल्व किया बेटा. वी हैव गॉट द आंसर 43.33 km per hour. बोलो बेटा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? टाइप 3, when speed and distance is given, टाइप 3 बेटा, टाइप 3 when speed and distance is given, see, speed and distance is given. Suppose a person is traveling 300 kilometer at a speed of 60 km per hour. A person is traveling 300 kilometer at a speed of 60 km per hour, and another person is traveling 400 kilometer at a speed of 80 km per hour. 80 km per hour. Those who are not thorough with the concept, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो वो बेटा क्या करेगा, आपको दोनों स्पीड दी है, वो सीधे फॉर्मूला यूज करेगा 2 into 60 into 80, क्योंकि उसने यही फॉर्मूला पढ़ रखा है 2s1s2 upon s1 plus s2. But बेटा this formula is valid only when the distance covered in each case is same. जैसे प्रीवियस मैंने बताया था, यहाँ पे स्पीड दी हुई है, बच्चा फॉर्मूला यूज कर सकता है, आंसर डिफरेंट आएगा. बेटा अलग अलग स्पीड है, अलग अलग टाइम ले रहा है, मींस डिस्टेंस अलग अलग कवर किया होगा. डिस्टेंस कवर्ड बाय एज विल बी डिफरेंट. तो बेटा डोंट यूज दिस फॉर्मूला. ऑल्दो मेनी टाइम्स यू विल सी अ ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, बट बेटा दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन the distance is constant. Now beta, in this case if you are going to calculate average speed, what is the definition? Total distance upon total time. But in this case total distance is given to you. Total distance is how much? 700 kilometer. But total time is not given to you. Total time we will calculate. Beta 300 kilometer in 60, कितना टाइम लगेगा? 5 hours. 400 किलोमीटर विद स्पीड 80, हाउ मच टाइम? 5 hours. टोटल टाइम बेटा कितना लग रहा है? टोटल टाइम पर्सन इज टेकिंग 10 hours. एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 700. So my average speed
is nothing but 70 km per hour. बोलो बेटा, is this clear to everyone? Is this clear to everyone ना? Gurpreet, is this clear? Sambhav, is this clear beta? Yes, sir. Now, one more thing, one last category, one last category. I am going to show you one last category. I am going to show you, and what is this? When distance and time is given. When distance and time is given. When distance and time is given. When distance and time is given, suppose person is traveling. This is very simple. Suppose person is traveling 300 kilometer in 2 hours and 220 kilometers in 4 hours and 180 kilometer in 3 hours. Suppose he is going to ask for average speed. So what is average speed? Total distance. Total distance 300 plus 220 plus 180 upon total time 2 plus 4 plus 3. 2 plus 4 plus 3. What is the total distance? 180 plus 220, 400 plus 300, 700 upon 9. 700 upon 9. ठीक है बेटा, 246 plus 3 9, 700 upon 9. After solving this you will get 77.78 km per hour as your average speed. As your average speed. बोलो बेटा, is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Very good. सो क्विकली देखते हैं बेटा, क्विकली क्या क्या हमने पढ़ा है. क्विकली लेट्स टेक अ रिकैप बेटा. आई वॉज एक्सप्लेनिंग दिस एलसीएम कॉन्सेप्ट बट आई हैव लेफ्ट इट इन बिटवीन. मैंने बेटा, मैं आपको ये मेथड बता रहा था बट मैंने ये बीच में ही छोड़ दिया है. देखो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. एक एवरेज स्पीड हम एलसीएम मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे. द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, the concept to calculate average speed with LCM method later on we will discuss it. Later on we will discuss it. बाद में ये डिस्कस करेंगे हम बेटा. I have left it with in between. मैंने बीच में ही छोड़ दिया है. तो बेटा देखते हैं. First we have started with the new topic. The topic was the concept of average speed. First we have seen the basic definition of average speed. Average speed is nothing but it is the ratio of total distance covered to the total time. Total distance covered to the total time. We have seen the different types. In what types examiner can ask to calculate the average speed. Average speed बेटा 4 तरीके से पूछ सकता है. When only speed is given, जब आपको बेटा स्पीड देगा तो he will mention in the question that distance travel or distance covered is same. सेकेंड, जब बेटा आपको स्पीड और टाइम गिवन होगा, स्पीड और टाइम गिवन होगा. थर्ड बेटा when speed and distance is given to you. And the last one is when distance and time is given. When distance and time is given. One by one we have seen. One by one we have seen. One by one we have seen. ठीक है, पहले हमने देखा बेटा सेम डिस्टेंस है, टाइम कैलकुलेट किया. ठीक है, आफ्टर दैट हमें एवरेज स्पीड मिला. बट देर इज सर्टेन लिमिटेशन ऑफ दिस फॉर्मूला. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड इज कांस्टेंट और सेम. जो भी स्पीड दिए हुए होंगे एवरेज स्पीड उन्हीं के बीच में आएगा बेटा. एक और एग्जांपल मैंने लिया. अगर ये चार पार्ट भी देता ना बेटा, सपोज करो एक और पार्ट देता बेटे S4 स्पीड से, तो कुछ नहीं करते, वो भी कैलकुलेट कर लेते हम बेटा, टाइम कैलकुलेट कर लेते. ठीक है बेटा.
Then we have seen the formula for three speeds, but again there is a limitation of this formula, valid only when distance is constant. Distance is constant. Then we have seen the different type. Type 2 when speed and time is given. जब भी आपको स्पीड और टाइम देगा बेटा, तो स्पीड टाइम के डेटा को यूज करके we will calculate the distance covered, we will calculate the distance covered and टोटल टाइम दिया है, टोटल डिस्टेंस मिलेगा तो एवरेज स्पीड आएगा. आफ्टर दैट व्हेन स्पीड एंड डिस्टेंस इज गिवन, स्पीड डिस्टेंस को यूज करके हम बेटा टाइम कैलकुलेट करेंगे. और जब बच्चों आपको डिस्टेंस और टाइम दिया है तो कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस आपको ऐड करना है, टोटल टाइम ऐड करना है और सीधे फॉर्मूला यूज करना है. व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो बेटा सो बेटा this was the concept of average speed calculation. This was the concept of average speed calculation. So we will see some questions